हम लोग इसको फिर से वापस रिक्रिएट कर लेंगे यदि जरूरत पड़े तो। राजीव सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। लेट अस स्टार्ट। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। राइट। भरत जी सर एक रिक्वेस्ट है जी कि आप उस दोनों को स्क्रीन पे लीजिए। पहले जो 2 पन्ने का 3 पन्ने का जो मैंने बनाया था कैप्टिक, उस फाइल पर स्क्रीन पे। यही है सर। देख पा रहे हैं सर? यस एग्जैक्टली यही डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकेश जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। तो हम लोग शुरू करें क्या? सर बिल्कुल। देखिए इसमें राकेश जी सर we are aware कि so many people are interested in drafting and drafting is the biggest challenge for the examination. Right sir. Because since last 2 years lot of persons were trapped into this paper, particularly the drafting. सर So drafting को डिस्कस करने से पहले मुझे लगा कि ड्राफ्टिंग के कुछ certain ingredient, whatever the certain ingredient of the drafting, let us put down on one page so that we can confine and we can analyze at drafting. आज के मीटिंग का एजेंडा क्लियर है और वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ड्राफ्टिंग. नेक्स्ट, what would be the source and how we will compose a particular ingredient of the drafting. That ingredient might be the grounds, substantial question of law, prayers and synopsis. For SLP, first of all we will discuss about the format of SLP as prescribed in Supreme Court rules form 28. So as we know, the form 28 is not containing the fact of the cases as well as the synopsis. So my first point is this. सर आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है।
It's breaking a lot. Okay, I'm trying to. Okay. नहीं भरत जी, आप इसको अभी मत लाइए, अभी इस फॉर्म को नहीं चाहिए मुझे। पहला वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, तो वो जो पहले, हाँ यही डॉक्यूमेंट थोड़ी देर के लिए रखें। Is there any someone which is uncomfortable in Hindi? ठीक है सर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऐसे भी हैं जो हिंदी में अनकंफर्टेबल हैं? रिगरस हिंदी में अनकंफर्टेबल है, नॉर्मल हिंदी इज ओके। हाँ, सो नॉर्मल हिंदी ही मैं बोलूंगा, रिगरस हिंदी जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा था, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to identify the basic ingredients of the draft. भरत जी, पॉइंट को थोड़ा इसको ऊपर कीजिए, पॉइंट सी पे लाइए नीचे। चल। Yes. Keep it on the frame. थोड़ा और नीचे करके 1 to 10 पॉइंट है उसको। नहीं, वो नहीं, थोड़ा और ऊपर कीजिए। ओके। The point C only. Yes. So you can see there are the drafting necessary ingredients, either standard and prescribed. What does it mean, standard and prescribed? मैंने लिखा है यहाँ पर standard and prescribed. There are two types of drafting, which is drafting format. This is concerned to the drafting format. So one type of the drafting format is that which is already prescribed into the rules and regulations or statutes. For example, Form 28 is the part of Supreme Court rules. It is already provided. It is already prescribed by the rule framers. So my point is this, but at the same time, the transfer petition format is not there. The first thing what I want to point out is what would be the drafting pattern or ingredient or paragraphs orders in the standard format, like transfer petition, like appeal, whose format is not prescribed in the Supreme Court rules. And what is the meaning of prescribed and how we populate the prescribed format. So let us spend some time on the format of the drafting. Then I will enter into all these 10 parts one by one for standard as well as prescribed. Then I will show demonstration of the. सर एक रिक्वेस्ट है सर किसी ने सर माइक खोला हुआ है सर, आपका ना वॉइस इको हो रहा है। अगर सर आपके अलावा सभी अपना माइक बंद कर देना, फिर क्लियर आवाज सुनाई देगा सर। चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कैंडी आप लोग अपना माइक को म्यूट कर लें तो शायद इको ना हो। पीयूष हैंस जी हैं, उनके माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। पीयूष जी चलिए, थैंक यू। अब ठीक है ना? यस सर, यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरीके की ड्राफ्टिंग है। वन इज द प्रिस्क्राइब्ड, अनदर इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड means whatever is in the culture but not specifically designed and incorporated into the rules but in practice. Second is fully prescribed by rule makers and in placed into the rules. For example, हम ड्राफ्टिंग अपील की बात करें, ड्राफ्टिंग टीपी की बात करें, तो इनके फॉर्मेट हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अवेलेबल नहीं है।
However, Form 28 SLP के लिए format already available. So my point is this: the format of SLP is prescribed into the Supreme Court rules. However, the format of appeal, transfer petition, arbitration petition, even sometimes writ is not prescribed. Writ is already prescribed somewhere, but not in the Supreme Court rules. तो इसमें कैसे लिखे? क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस ये देखे कि अरे इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, इसका कंपाइलेशन क्या होना चाहिए, someone had written on book on that, someone has taken, someone not taken, and so on so forth. Lot of challenges and lot of confusion regarding the format of the draft. And after that, I have the privilege to see the lot of almost around 50 answer sheets which is taken through RTI from Supreme Court regarding AOR examination. And I realize that there are lot of, imbalance into the prescribed format which need to be addressed to the examinee especially. Now, my point is, let us talk about the Form 28 first. So, Form 28 having the 8 paragraph. Paragraph 1 regarding introduction of the impugned order. Paragraph 2 regarding sub-question of law. Paragraph 3 and 4. These are dedicated to two declarations. These are dedicated to two declarations. Paragraph 5 and 6. This is dedicated to, sir, mic अपना mute कर लीजिएगा please. Paragraph 5 and 6 dedicated to the grounds, one for the main ground, another is for the interim ground, and paragraph 7 and 8 is dedicated to the prayer. Paragraph 7 is the main prayer, paragraph 8 is interim prayer. And that is the structure prescribed for the Form 28. Just imagine a situation, ये फॉर्म 28 सुप्रीम कोर्ट रूल्स में हम सबके पास है, हम उसमें बहुत ज्यादा इंटर करना नहीं चाहते, बट फिर भी फॉर द टाइम बीइंग मैं थोड़ा सा उसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स के पर्टिकुलर प्रोविजन पे मैं इंटर करना चाहूंगा. Let me just open that Supreme Court rules. शेयर कर दें सर? Yes. नहीं अभी शेयर मत कीजिए, ये रहने दीजिए, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा. So once just Abhinav Srivastava ji, can you just mute your mic, please? So let us continue. So, Yes, sir. I am talking about the Form 28 and the structure of the Form 28, which is prescribed in the Supreme Court rules as Form 28. पहले कुछ preliminary doubts and questions regarding Form 28 थोड़ा सा हम ये डिस्कस करना ये चाह रहे हैं कि Form 28 कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है. What is the starting point and end point of the Form 28?
Does this start from to the Honorable Chief Justice of India and companion judges of India? Is this the starting point? The answer is no. The starting point is in the Supreme Court of India, under bracket SCR, order 21, rule 31A. Civil appellate jurisdiction, special leave appeal, special leave petition, under bracket, under Article 136 of the Constitution of India, SLP civil number such and such of such and such year. This is the one part, which is I am saying addressed to the court, and I am generalizing this कि यदि हम किसी भी कोर्ट में कोई भी पिटिशन मूव करेंगे तो वहां पर कोर्ट का एड्रेस तो होना चाहिए, लाइक इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट सर्टेन प्लेस, लाइक इन मैट्रिमोनियल केस बिफोर द प्रिंसिपल जज सच एंड सच इन द लर्नेड कोर्ट. सो दिस पार्ट इज comprising two things. Be careful about this part. One is the address to the court, and another is remedial provision under which you are approaching to the court. And in other words, I can say the jurisdiction of that court. Am I clear up to this point? Yes, sir. Meaning thereby, if I will again read this part, then in the Supreme Court of India, under bracket is this Supreme Court rules order 21 rule 31A. What is this reflecting? It is reflecting towards under this provision I am approaching, which is connected to a special leave to appeal civil appellate jurisdiction under Article 136 of the Constitution. Just imagine this part is prescribed here, or someone is going to be disturbed or forget to write this particular rules or under Article 136 of India. What impression they will reflect before the examiner? They will certainly deduce their marks because of two reasons. Reason number one, they are disturbing the prescribed format, and another thing is they are also disturbing the logical integrity of the particular petition. So my first point is this: during examination we must have to careful regarding this address part, address to the court, and jurisdiction part, under which jurisdiction we are approaching. I am comprising the 2 points in this place. Kindly, please mute your mic. Sorry, sir. Please mute your mic. yes. मैडम गायत्री प्लीज आप माइक म्यूट कर ले, अपना म्यूट कर ले, सो दैट वो डिस्टर्बेंस नहीं है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो फर्स्ट प्रिकॉशन, what we have to do and what we not have to do. The first precaution is the address part in the form 28 should not be disturbed, and it must be according to the provision of law, and it comprises the two part again, and that is the address to the court and jurisdiction of the court. Am I clear up to this point? Yes, sir. And it must be above all, जिस ऑर्डर में यहाँ पे दिया हुआ है. Next, we are addressing to the court and saying that this is the parties which is coming here. That is called the memo of parties. The another mistakes people are doing, they are forgetting to make distinction between the memo of parties and cause title.
For example, in a particular matter in a SLP, say, for example, there are 25 petitioner and 49 respondent. Once we are writing the cause title, we are writing the name of petitioner and others versus name of respondent and others. If there is only one petitioner, we are only writing name, and two petitioners, then we are writing name of the first petitioner and ANR, and so on and so forth. Everyone knows here too how to write this. So this combination is called cause title. But once we are writing the entire address of each and every individuals in proper order, respondent petitioner number 1, petitioner number 2, petitioner number 3 and all, and versus then respondent number 1, 2, 3 and all, then this is called the memo of parties. In affidavit or in every application or documents associated with the main application. Now I am using the word the main application. Main application or main petition is those part which is going first time into the case for a particular dispute. जैसे एसएलपी को ड्राफ्ट करते हैं और एसएलपी फाइल करते हैं सब फर्स्ट टाइम. अब ये तो मेन हो गया. अब इसके अंदर जैसे ही कोई काउंटर आएगा या कोई और एप्लीकेशन इससे एसोसिएटेड आएगा तो वो इस केस से कनेक्टेड होगा. इस एसएलपी का एक पर्टिकुलर नंबर होगा और उस नंबर के साथ बाकी सारे बाइंड अप होते जाएंगे, एसोसिएट होते चले जाएंगे. दैट इज द सप्लीमेंटिंग. मैं मेन की बात कर रहा हूं. जब भी कोई भी मेन होता है तो उसमें मेमो ऑफ पार्टीज एलोबरेटेड होगा. पूरा कंप्लीट मेमो ऑफ पार्टीज इज रिक्वायर्ड. बट इन काउंटर affidavit or any IA or any other application, only cause title is required. Even in affidavit, even in certificate. इंदु मैम रिक्वेस्ट है कि माइक अपना ऑफ कर लीजिए प्लीज. थोड़ा सा आवाज आता है और लोग डिस्टर्बेंस. थैंक यू. सो मैं ये कह रहा था कि मेमो ऑफ पार्टीज एंड काउज टाइटल केयरफुली आप चूज कीजिए कि कहां पर आपको लिखना. मेन पिटिशन में मेमो ऑफ पार्टीज रिक्वायर्ड है, अदरवाइज इट इज नॉट. अदरवाइज द काउज टाइटल इज मोर देन सफिशिएंट टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर. So it was the another distinction, another focused point for the SLP and for any drafting, not only confined to the SLP. For any drafting, these two parts we are incorporating. But in this case, chunki special leave to appeal is the appellate jurisdiction, meaning thereby some judicial order is under challenge. Might be possible in the court below or in the high court, some respondent here is the petitioner. It is possibility there. So that's why we need to clarify to understand the court, what was its exact position court below and here, up to here. So that's why the word is written position of parties in court or tribunal from whose the petitioners arise are in this court. There are in the form 28, there are two columns there. We can add third column if required. For example, in criminal cases or civil cases, once trials is concluded and it was challenged before the high court in appeal, and appeal is also concluded, and then the parties are here. We will come later. Let me explain this part first. Then I will compare with the SLP criminal and civil both. And right now I will do. Be patient. So the another part, memo of parties,
position before the trial court, position before the high court, and position before this court, it also should be incorporated here. It was the second part of SLP what I discussed. Once again I am saying, repeating from start to up Form 28. Form 28 का first part जो मैंने कहा वो address और head है, which is 5 or 6 lines. 6 lines comprises है, that is in the Supreme Court of India, Supreme Court Rules Order 21 Rule 31A, Civil Appellate Jurisdiction, Special Leave to Appeal under Article 136 of the Constitution of India, SLP Civil Number such and such. ये पूरे पार्ट को मैंने SLP Part 1 कहा, मैंने नाम दिया है, पहले से कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, for the sake of convenience to understand. This Part 1 comprising two things. One is address to the court, another is provision of the court, provision of the jurisdiction of the court under which we are proceeding the petition. And if I would like to generalize all these things, entire proceedings, entire drafting, accordingly we can amend. Two things is required. One is the jurisdictional provision and rules of that particular court, and another is the address of the court. Any petition, थोड़ा सा मैं यहाँ जनरलाइज कर दूं इससे हट करके, कोई भी पिटिशन हम डालेंगे, बिना इसके यदि पिटिशन डाला कहाँ जाएगा? मतलब बिल्कुल वैसा ही है कि हमने लेटर तो लिखा लेकिन बिना एड्रेस का। और मैंने देखा है जिस किसी ने भी ये पार्ट को छोड़ दिया है, they are getting less than 10 marks. Almost 5 copies I had seen in last 2 years, जहां पर इस पार्ट को इमेजिन कर लिया गया था कि अरे ऐसा तो होता ही है, इसमें क्या करना है, उनके 10 से नीचे मार्क्स आए। नंबर 1, तो बी केयरफुल कि ये लॉजिकल इंटीग्रिटी डिस्टर्ब ना हो और आप इस चीज को लिखें और इसको जरूर लिखें। और ये बहुत कॉमन पार्ट है, नॉट फॉर दिस, फॉर ऑल। मेमो ऑफ पार्टीज इज रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज द मेन पिटिशन। नाउ उसके बाद शुरू होता है दिस टू इंग्रेडिएंट के बाद तीसरा पॉइंट शुरू होता है पिटिशन का स्टार्टिंग पॉइंट, दैट टू ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मिनिमम वर्ड, बहुत ज्यादा नहीं है, बट यू नीड टू मेमोराइज इट सो दैट इवन सो प्रैक्टिस की आपको दिक्कत ना हो। द SLP ऑफ द पिटिशनर मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्वेट, ये 2 लाइन है। और उसके बाद पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 7 और पैरा 8, 8 पैरा है। इसमें आप यदि 8 पैरा को यदि 6 पैरा कर दें या 7 पैरा कर दें, it would be amounted as you are disturbing the prescribed format. For example, किसी SLP में आपको ये interim relief नहीं लेना है, तो उसके लिए इंटरिम वाला जो पोर्शन है दैट इज इंटरिम ग्राउंड, दैट इज पैरा 6, और इंटरिम प्रेयर इज पैरा 8। सो हम उसको हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? लिखे ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि हम लिखें और वहां पर NA लिख दें, नॉट अवेलेबल। सो दूसरे ऑप्शन को जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, बट यदि उस दोनों को हम हटा लेते हैं, then we are disturbing the prescribed. Be careful at this point also. Now, सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग की बात करें और इस फॉर्म 28 से कंपेयर करें, इसको बेसिस बना के अदर ड्राफ्टिंग का कंपैरिजन करें, तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू रफली इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पुग्न्ड ऑर्डर और जजमेंट। ये है
डिस्प्यूट का जो मेन सेंट्रल पार्ट है उसको यहां पर डिस्कस किया। द पिटिशनर अबव नेम्ड रिस्पेक्टफुली सबमिट दिस पिटिशन seeking a special leave to appeal against the judgment and order of such and such court, पूरा कोर्ट का डिटेल्स, एंड दैट्स इट। तो ये इम्पुग्न्ड ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट हम यहां पर आए हैं और हमको ये चीज चाहिए। 3 बात मैंने बोला, दिस इज द इम्पुग्न्ड ऑर्डर अगेंस्ट whom I am here, which is passed by such and such court, and I am here for seeking a special leave to appeal. This part I say introductory paragraph, introduction to the impugned order. Am I correct or not? Yes, sir. Correct. So now I am generalizing the para 1 to other draft. कोई भी ड्राफ्टिंग में आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे, आपका डिस्प्यूट वहां पर होगा और सम सोर्स ऑफ द डिस्प्यूट वुड बी देयर। इवन इन द रिट, legislative order might be possible, executive order might be possible, agreement might be possible, against whom you are coming there. In appellate provision judicial order जरूर होता है। यदि किसी भी अपील की बात करते हैं तो अपील तो जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट ही होता है। ऐसा संभव है बिना जुडिशियल ऑर्डर के ही हम जुडिशियल अपील में आ जाएं? नहीं। और ओरिजिनल जुरिडिक्शन में हमेशा उसका जो सोर्स होता है वो फर्स्ट टाइम कोर्ट में होता है, तो जो एग्रीड पोर्शन पार्ट है, डॉक्यूमेंट है, वो अंडर चैलेंज होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल पिटिशन and appellate petition, appellate jurisdiction, original jurisdiction and appellate jurisdiction side pleadings are, in the appellate side we have a impugned judicial order in hand as an impugned order or judgment before that court against whom you are here. You are aggrieved with that part, but this part is not available for the original side drafting and jurisdiction. It's a basic difference between appeal and original side. Just think, we have in appeal, there are lot of statutory appeal, constitutional appeal, even SLP. These are the appellate jurisdiction. But we will move to the original jurisdiction. We have a suit, that is the plaint for the suit under Article 131. Another is election petition, arbitration application, writ petition, PIL. इसमें कौन से ऑर्डर को हम चैलेंज करते हैं? It may be executive order, may be legislative order, legislative act, or it may be agreement between two parties, or it may be any other part, but there not we have the judicial order. This is the genesis of a difference of these two appellate jurisdiction and original jurisdiction for the purpose of drafting. What I want to say, either original part or appellate part, the first paragraph must be dedicated to the introduction about the dispute. What is the source of the dispute? What is the central part of the dispute which is need to be addressed at initially? Like this. Again, I am reading the para 1. The petitioner / petitioners above named respectfully submits this petition seeking a special leave to appeal against the judgment and order of such and such passed by this court and number of this court, and all the judgment details are there. The word used here, again I am reading, the petitioner above names
respectfully submits this petition. Why? You are seeking a special leave to appeal. Seeking a special leave to appeal against the disputed parties there. This is the impugned order passed by this court in this matter and so and so. The detail of that part is here. And he said, mic unmute please, Gaurav, please, so that, thank you. So it was that part. Now I am moving to the another very important and crucial part of the SLP Form 28, that is the Para 2. Para 2 is the question of law. What is this question of law? There are one term we can discuss about a very crucial part of the entire drafting, even the judgment is, or even entire litigation. In every court, there are issues before the court, and court is determining that issues one by one. That issue is disputed point. All the disputed points, questions, which is determined by the court to get the relief or to achieve the objective of the adjudication. That may be issues is a comprises of questions, bundle of questions, that is called issues, which may be question of fact, which may be question of law, which may be mixed question of fact and law, which may be substantial question of law. The bundle of all these are the issues before that court. And court are bound to decide either all or some of issues logically under the four corners of jurisprudence available and law. मीनिंग देयर बाय हमने पहले पैराग्राफ में ये तो कहा कि इस इंपुग्ड ऑर्डर के अगेंस्ट हम आए, दैट्स इट. दूसरे पैराग्राफ में अब जरा लॉजिकली सोचिए, सामने वाला ये कहेगा कि इसमें गलत क्या है. आप कहेंगे कि गलत क्या है, ये तो मेरे साथ इस वजह से इसने क्या ये ऐसा कर सकता था. हाईकोर्ट ने जो किया वो उसका जुरिडिक्शन ही नहीं है. क्या हाईकोर्ट ये लॉ है, लॉ को जंप कर रहा है. हाईकोर्ट ने ये गलत किया. वेदर हाईकोर्ट आर अलाउड टू जंप देयर ओन जुरिडिक्शन एंड सिटिंग इन अपील एंड डिसाइडिंग इन द एक्सरसाइजिंग द रिट जुरिडिक्शन. मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं. मेरे कहने का क्लियर मीनिंग ये है कि यदि कोई कोर्ट बैठती है तो किसी लॉ, सब्सटेंशियल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, एंड नंबर ऑफ लॉ इज मैपिंग ऑन दैट, even though after that some jurisprudence is there, settled principles and certain culture is also there, even case law is also there, and the court is binded to discharge their duties within the four corners of law fairly, which is known as rule of law. Otherwise, rule of law is defeated. And the entire purpose of adjudication and the establishment of court would be defeated, which is not allowed, because the rule of law is the part of basic structure doctrine. I will go into the later, but मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, the question of law comprises, question is the disputed point which is determined by the court logically on the basis of evidence induced before them.
under the four corner of law and jurisprudence. That may be the question of fact, that may be the question of law, but anyway जब कोर्ट फर्स्ट टाइम कोई भी मैटर को किसी कोर्ट में लेकर के जाते हैं ना, तो उसमें हमारे हाथ में फैक्ट होता है. जैसे मान लीजिए एक ने कहा कि इसे एक को थप्पड़ मारा, दूसरे ने कहा नहीं मारा. अब पूरा पनिशमेंट बेस्ड है. थप्पड़ मारने वाले को रेप्रिमांड किया जाएगा. मान लीजिए कि एक पनिशमेंट है, रेप्रिमांड के डांट फटकार लगेगा फॉर एग्जांपल, एंड दैट इज द लॉ सपोज. तो उसको रेप्रिमांड करने के लिए आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि इसने थप्पड़ एग्जैक्टली मारा भी या नहीं. So this point is the disputed point. This point is the disputed point. एक पिटीशन आप डालते हैं तो बहुत सारा एलिगेशन लेकर के जाते हैं रिस्पोंडेंट के ऊपर. रिस्पोंडेंट आता है, बहुत सारे पॉइंट को वो एडमिट कर लेता है, बहुत सारे पॉइंट को वो एडमिट नहीं करता है. जिस पॉइंट को वो एडमिट नहीं करता और रिलीफ के लिए मैंडेटरी है, दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू the issues, because there are the points where created the dispute. अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बतला रहा हूं. एक केस में ट्रायल में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉइंट्स हैं जो पिटिशनर एलिगेशन लगा रहा है, रिस्पोंडेंट समवेयर डिनाई कर रहा है, और कोर्ट फ्रेम कर लिया एक इश्यूज पे ये क्वेश्चन को आंसर जरूरी है टू डिसाइड द इंटायर केस. तो उसने क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए और उस सारे क्वेश्चंस को बाय वे ऑफ एविडेंस वो प्रूव करेगा. दोनों साइड के प्रूफ के बाद वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या एग्जैक्टली आंसर आता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट, इफ डिसाइडेड कि समवन इज स्लैप्ड, देन दे डिजर्व टू बी रेप्रिमांड. रेप्रिमांड इज द पनिशमेंट. तो पहले जैसे ही प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट, अनदर क्वेश्चन वाज देयर कि इसको पनिशमेंट देना है या नहीं, पनिशमेंट अप्लाई करता है या नहीं. प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट पे यदि कोई सा लॉ अप्लाई करता है या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ. व्हिच लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड द क्वेश्चन ऑफ लॉ. इस केस में मैं दूसरा पॉइंट में ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है कि इंटायर ट्रायल में दो पार्ट इश्यूज में होते हैं. वन रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अनदर रिगार्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ. If proved fact, the remedies goes accordingly in the favor of the parties as per law. But imagine कीजिए जरा ध्यान से, जो एडमिसेबल क्या क्या गड़बड़ हो सकता है ट्रायल में. एविडेंस वैसे इंड्यूस किए गए और एक्सेप्ट किए गए जो एडमिसेबल नहीं थे. इट वॉज द एरर एट द एंड ऑफ judicial officer against the settled principle of law and law, because law saying it is admissible and he was admitted as it was unadmissible part. So it was error occurred on that part. Possibility is there. या फिर ऐसा हो सकता है फैक्ट के साथ कुछ गलत हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस फैक्ट के बेसिस पर जो हम रीजनिंग अप्लाई कर रहे हैं, लॉ अप्लाई कर रहे हैं, कि ये है इसका मतलब ये निकलता है. यानी फैक्ट इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग व्हिच कैन नॉट बी चेंज, एंड इसका मतलब ये होता है ना, वी आर इन्फरिंग समथिंग, वी आर डिराइविंग समथिंग फ्रॉम द फैक्ट्स. Point is this: once when we are driving something, the facts might be possible कि हम wrong direction में चले जाए क्योंकि conclusion कुछ और हो और हम कहीं और चले जाए.
So possibility of error is also there in drawing our conclusion, in drawing our reasoning at the end of judicial officer, which may be reflected into the impugned judgment. Am I clear or not? Now the point is this, that also possible some procedure we jumped, because procedural binding is also there in with the court in terms of CRPC, in terms of CPC and otherwise rules and regulations. So some procedure was required, we did not follow that procedure. Since the procedure is scientifically developed, so once we jump the procedure, possibility is there we will land upon wrong conclusion. Or something exactly against the available the law or jurisprudence. So what I was to point out, how and where may be error in the impugned judgment passed by judicial officer court below. Can you imagine ये जो प्रोसीजरल एंड जुडिशियल ऑफिसर के एंड पे जो गलती हो सकती है, प्रोसीजरल पार्ट पे या एविडेंस पार्ट पे या कंक्लूजन पार्ट पे या लॉ कंप्लायंस एप्लीकेशन के पार्ट पे, इज इट पॉसिबल माने वो ट्रायल में माने जैसे ही हम अपील में आते हैं तो अपील में फैक्ट से रिलेटेड इश्यूज के अलावा इन लॉ इस सारे क्वेश्चंस को हम रेज करते हैं एपलेट कोर्ट के आगे कि ट्रायल कोर्ट ने ये किया, ट्रायल कोर्ट ने ठीक से फैक्ट कंस्ट्रूड नहीं किया, ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्ली ग्राउंड पिकअप नहीं किया, ट्रायल कोर्ट ने अनएडमिसिबल पार्ट को अलाउ कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने इस प्रोसीजर को जंप किया, ट्रायल कोर्ट ने इस लॉ को वायलेट किया, इसको इग्नोर किया, इसको कंसीडर नहीं किया एंड सो ऑन सो फोर्थ. दैट इज ऑल द सपोर्ट ऑफ आवर पिटिशन. वी आर रेजिंग द ग्राउंड एज व्हाट रॉन्ग डिड बाय the court below which should not be allowed and which resulted into injury of the parties, interest of the injury to the parties. ये ingredient appellate court के पास होता है by way of impugned judgment or order which is judicially passed, but the same thing not available to the trial court. ट्रायल में क्या होता है, सेट ऑफ फैक्ट होता है. ट्रायल में क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन होता है. व्हाट इज दिस कॉज ऑफ एक्शन? हर कोई ने सुना होगा, समझा होगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करने का कोशिश करता हूं. कॉज ऑफ एक्शन इज अ सेट ऑफ फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस. Not entire fact. It is a set of facts which discloses three ingredients. Number one, rights of the parties and relationship between the parties. So, cause of action comprises basically three ingredients. One, source of relationship between the parties. Another, right of the parties is infringed. Another is the liability of the respondent to fulfill that part, that liability as per the source. And third is the right is infringed. Petitioner's right is infringed. ओनली आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई सोर्स ही नहीं है जो कि दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो, कैसे कोई कंप्लाई करा देगा? दूसरा पार्ट को आप इमेजिन कर लीजिए कि दूसरे की लायबिलिटी ही नहीं थी रिस्पोंडेंट की, आप किसके अगेंस्ट लेंगे, कैसे लेंगे? और इसका राइट जब इन्फ्रिंज होगा तभी तो ये आगे अप्रोच करेगा. तीनों इंग्रेडिएंट को कंपाइल करके जिस फैक्ट में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉज ऑफ एक्शन.
फॉर एग्जाम्पल आपको फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करेगा तो आप 3 चीज लिखेंगे, और वो ये लिखेंगे कि रिस्पोंडेंट्स आर स्टेट, आई एम द सिटीजन, माई राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी is infringed because by this way discriminated with me, and तीनों इंग्रेडिएंट की बात मैं कह रहा हूं. द आर्टिकल 14 ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, स्टेट एंड द पिटिशनर. नाउ another part, the liability of the state to protect the right of the fundamental right of the petitioner, but that is failed to protect, then we are coming to the court to the enforce. आप ये देखिए कि इसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट कंपाइल हुआ या नहीं. So it's the logical connection कि ये 3 चीज के बिना कोर्ट में कितना क्योस क्रिएट होगा, अदरवाइज कितनी क्लियरिटी आएगी कि चलो ये तीनों चीजें आगे मूव किया जाए. सो दैट पर्पस द कोर्ट इज सीकिंग दीज 3 इंग्रेडिएंट इन ऑल द ओरिजिनल पिटिशन, ओरिजिनल साइड पिटिशन. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आइदर एपलेट जुरिडिक्शन एकदम जनरलाइज करके एक मास्टर की बनाने की कोशिश कर रहा हूं. तो आइदर हमारा एपलेट साइड ड्राफ्टिंग हो या पिटिशन इन फॉर्म ऑफ पिटिशन, और ओरिजिनल साइड. एपलेट साइड और ओरिजिनल साइड में द बेसिक डिफरेंस है कि एपलेट साइड में हमारे पास इम्पुग्न्ड ऑर्डर, और उसका डायरेक्टली कंपैरिजन इन ओरिजिनल साइड वी हैव द कॉज ऑफ एक्शन in form of set of fact comprising 3 ingredient, relationship between the parties, liability of the respondent, and rights infringed by the petitioner. Am I clear up to this point? ओरिजिनल साइड में मेरे हाथ में या हमारे हाथ में बिल्कुल ही कोई इम्पुग्ड जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता यूजुअली, क्योंकि रिट में तो हम कई बार उसको इंटरप्रेट भी करते हैं इनफैक्ट इन सर्विस मैटर, बट स्टिल वी आर पॉइंटिंग आउट इस वजह से मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज. सो माय पॉइंट इज वेरी क्लियर. व्हाई पैरा 2 इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ. इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट is reflecting in the paragraph 2 में आप incorporate कीजिए what wrong has been done with the impugned judgment. lawfully impugned judgment में क्या गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए. that you are encapsulating in the form of question before that court, and that questions need to be determined by the court, which may be leaded to the reported judgment. In virtually, you are framing the issues for the court in the question of in Form 28 SLP Para 2. That's why this is important. If you will understand the case, then certainly you are able to understand what wrong did with your parties, which should not be, and that is the part of sufficiency that is sufficient to reflect into. And what is the ground? Ground is those regions, set of regions, which leads to justify your claim lawfully. ट्रायल कोर्ट ने सही से इस फैक्ट को समझा नहीं, तो उसको इस लॉ के हिसाब से समझना चाहिए था. लॉ ये कहता है कि वो जंप कर गया जो नहीं करना चाहिए था. मैंने सारा चीज आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर, बिकॉज दिस मतलब नॉट रफ लैंग्वेज में कहें कि आपको रिलीफ क्यों दे, आप कहेंगे कि ये हुआ मेरे साथ, लॉ ये कहता है क्योंकि
ये लॉ ये प्रोविजन है क्योंकि ये गलत किया, ये वो गलत किया, जितने भी लेकिन और क्योंकि आप इंटरप्रेट करेंगे ऑल वुड बी द रीजन, बट एवरीथिंग शुड बी लॉ व्हिच इज within four corners of jurisprudence and law enforcement. तो वर्चुअली इस ग्राउंड्स की ऑब्जेक्टिव होती है, जो भी ग्राउंड्स आप लिखते क्यों, आप कहेंगे सिंपल सा लाइन में आपसे पूछना चाहता हूं कि एक मैटर पेंडिंग है और आप उसके अगेंस्ट आ रहे हैं यानी इंट्री ऑर्डर, आप कोर्ट को कहते हैं कि मुझे स्टे चाहिए। फॉर एग्जांपल टीपी का ले लेते हैं, टीपी में क्या होता है, ट्रांसफर पिटीशन फाइल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक के लिए, और वहां हम स्टे एप्लीकेशन क्यों लगाते हैं भाई, क्योंकि यदि ये स्टे नहीं हो और टीपी डिसाइड हो जाए पूरा मैटर ही कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर आने। तो आप क्या कहेंगे कोर्ट को कि मुझे स्टे लगा दो, मैंने उस प्रोसीडिंग को स्टे करो, रिक्वेस्ट करेंगे और कोर्ट यहां से यदि सेटिस्फाइड होती है देन दे पास ऑर्डर ऑफ स्टे। नाउ ऑर्डर ऑफ स्टे का प्रेयर वन पार्ट है, उस प्रेयर को सेटिस्फाई करने के लिए आप जो जो लॉजिक आप देंगे, क्यों आप कोर्ट तो पूछेगी ना भाई कि क्यों आपके प्रेयर को मैंने मान लिया जाए, क्यों आपके मैटर को वहां पर स्टे लगा दिया, आप कहेंगे कि बिकॉज यदि नहीं किया गया तो ये पर्पस भी नहीं किया गया तो इरिपेयरेबल लॉस होगा जिसका कुछ रेमेडी बाद में नहीं मिले, या फिर जस्टिस डिले होगा। तो कुछ रीजन आपको डेवलप करना पड़ेगा एंड दैट रीजन मस्ट बी इनकैप्सुलेटेड इनटू द ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ। So there is a logical connection directly between prey and ground. Connection part is this: if someone asks or court asks why this relief is granted to you, give me the 10 reasons. That reasons is the ground. Some set of grounds may leads to certain question of law. यानी ग्राउंड्स को जैसे ही हम लॉफुली एग्जामिन करते, एक लॉयर, एक एक्सपर्ट जो लॉ का जानने वाला हो, एक जजेस जो इतने दिनों से लॉ पे कर रहा हो, वो यदि समझे देखे उसको लगेगा कि इस ग्राउंड में समथिंग दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नीड, और ये फ्रेम करते क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड रेस्ट पार्ट इज मूविंग टुवर्ड्स सिनॉप्सिस। इज व्हाट सिनॉप्सिस में पहले इसको ही कंक्लूड करने में, वी हैव डिस्कस्ड पैरा 1, वी हैव डिस्कस्ड पैरा 2, its existence. Now we are going to discuss about para 3 and 4. Para 3 is the mandatory declaration. This is the first SLP. No other petition written is there. The petitioner states that no other petition seeking leave to appeal have filed him against the impugned order and judgment. The word is written there. The petitioner states that this is a statement, declarative statement, declaration है. No other petition seeking leave to appeal, यानी SLP, has been filed by him, it means petitioner, against the impugned judgment and order. Can you imagine इस पूरे सेंटेंस से कोई भी वर्ड को आप निकाल करके सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे? या यूं मैं कहूं कि ये लाइन बड़ा ऑप्टिमली डिजाइन करके रखा गया, मिनिमम वर्ड में बहुत सारे मीनिंग्स को इनकॉर्पोरेट करने के डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। Does it now? My next and final question, क्या हम सिर्फ ये लिख दें डिक्लेरेशन इन टर्म्स ऑफ रूल 3.2 और ये पूरा स्टेटमेंट ही हम हटा दें? Does it does not amount to the disturb the prescribed from 28? Answer is yes.
एग्जामिनेशन में आधे घंटे के टाइम में आपको पूरी पिटिशन प्राप्त करनी है। इस पूरे पार्ट में ये डिक्लेरेटिव पार्ट बहुत मैंडेटरी है। जब आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो कॉपी पेस्ट में ये हमेशा बना रहता है, वी आर इग्नोरिंग ऑल दिस पार्ट, बट एग्जामिनेशन में ये सर्टेन लॉजिकल कनेक्शन है। ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली रिस्क जुडिकेटर के लिए है। So this is having a very scientific meaning. Even another declaration is there. Even if you will go to the rule 3.2 of order 21, it clearly mentioned there, registries could not accept any petition without the statement. The statement they are seeking, na? So my point is this, कि once you are drafting SLP in the examination, this part should not be missed. If you will miss this particular line, you will certainly lose the marks because you are disturbing the prescribed format and you are also disturbing the logical integrity. And this is not much difficult. You may develop in one line, you may write in one line, and that is sufficient. That reflects your integrity, your thought process before the examination. Yes, you are well prepared. Now, next paragraph, next 4 paragraph is the very important that I was discussing. There is the ground and prayer. Ground is divided into 2 parts. First, main ground, then interim ground, and then prayer. Prayer first, main prayer, and then interim prayer. आप ये देख लीजिए, there are in handbook, there are form 32, form 33 in handbook. You know, one practice and procedure handbook is also available on the Supreme Court website. Also, if you will find out. जो भरत जी अभी शेयर करेंगे, भरत जी प्लीज थोड़ा उसके ऊपर ब्लिंक कीजिए 1 सेकेंड। भरत जी, भरत जी, शेयरिंग सर, शेयरिंग प्लीज जरा उसको स्विच कीजिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को सर। ओके सर। पहला पेज फर्स्ट पेज ऊपर टॉप पे। यस, थोड़ा सा और जरा इसका कंटेंट, बस इतना ही रुकेगा। This material is available on the Supreme Court website, Supreme Court of India Handbook on Practice and Procedure and Office Procedure. इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, इस बुक में फॉर्म भी appended है, including form 28, and there is some extension. Extension is form 32 and 33. Form 32 is regarding the writ, and form 33 is regarding the PIL. That is prescribed in this handbook, but not in the Supreme Court rules. But Form 28 is there. मैंने क्या किया कि Form 28 को बेसिस बनाया और उस बेसिस के बाद उसका कंपैरिजन अदर ड्राफ्टिंग फॉर्मेट से किया. That what I am doing here. यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जितनी भी ड्राफ्टिंग फॉर्मेट है, आइदर 32, फॉर्म 32, फॉर्म 33, फॉर्म 28 या फिर अदरवाइज, इन सब में ये 4 पैराग्राफ इंक्लूडेड होता ही है एट लास्ट. दैट इज ग्राउंड्स फॉर इंटरिम रिलीफ. यू मे चेक इट अप. 3 फॉर्म का नाम मैंने दिया. फॉर्म 28 उसको ले जाने की जरूरत नहीं है. फॉर्म 28, फॉर्म 32 एंड फॉर्म 33 तीनों इस हैंडबुक में अवेलेबल है. आप चेक करके देख लीजिए. तीनों का लास्ट 4 पैराग्राफ एज इट इज.
और उसके बाद सिग्नेचर है, then form 28 is finished. Does in this form 28 certificate is incorporated? The answer is no. Does this in form 28 affidavit is incorporated? The answer is no. Does this form 28 incorporated with synopsis? No. Does this incorporated with the other part of the SLP? The answer is no. So meaning thereby the central and core part is the form 28. Don't divert your brain towards की सर्टिफिकेट कैसे लिखे, ये लिखे, वो ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, ऐसे भी करना है, वो भी करना है. आपको जो करना है एडिशनली यू आर अलाउड, नो वन इज गोइंग टू डिस्टर्ब. बट एग्जाम में टाइम की बहुत स्कार्सिटी होती है, बहुत प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट इज बिगेस्ट इशू है. इसलिए फॉर्म 28 कंप्लीट रिप्रोडक्शन होना चाहिए. यदि अनलेस अंटिल नॉट रिक्वायर्ड या इंस्ट्रक्टेड इनटू द क्वेश्चंस, यदि कहता है कि आपको सर्टिफिकेट भी लिखना हो तो आप लिखिए. बट माय ओन एक्सपीरियंस एंड एडवाइस इज दिस, you must have to incorporate with synopsis which reflect your clear understanding regarding this case. And that synopsis may not be in front of form 20. पहले synopsis लिखो, उसके बाद form 28, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि केस की समझ तब आती है जब पूरा केस लिखा जाए. उसके बाद में आप एक पेज synopsis लिख सकते हैं जो आपको वैल्यू एडिशन करेगा. मैंने ऐसा ही किया था और यकीन मानिए मुझे 20 out of 25 मिला. That I am sharing with my experience. Next time I will share my answer sheet जो मैंने RTI से निकाला है, वो भी मैं शेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे उस पर मार्क्स मिले हैं. और मैंने इस पार्ट को डिस्टर्ब करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, एनहांस करने की कोशिश जरूर की. So addition into them doesn't amount to disturbance. इनका जो साइंटिफिक और लॉजिकल इंटीग्रिटी था वो मैंने मेंटेन किया. सो अगेन कम बैक टू द एंटायर फॉर्मेट ऑफ फॉर्म 28. इसको मैंने जो डिवाइड किया है वो बेसिकली आप जरा ध्यान से देखें तो वो 3 पार्ट है. पार्ट 1 कंप्राइजिंग एड्रेस टू द कोर्ट इंक्लूडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जुरिडिक्शनल प्रोविजन ऑफ द कोर्ट. Like in the Supreme Court of India, SCR Order 21 Rule 31A, Civil Appellate Jurisdiction, Special Leave to Appeal under Article 136 of India, SLP number. This is the one part. Another is the memo of parties, and third is the main body of the Supreme Court, SLP, which having the 8 paragraph that I explained. The logical integrity is this: the first paragraph is only speaking about the impugned order. Second paragraph, either cause of action in basically the original side, but here this question of law is the treated as question cause of action. ये गलत हुआ मेरे साथ. This is the question. Now 3 and 4 are the declaration. One is declaration regarding res judicata, another is declaration regarding all the materials taken in the court below that is only pursued before this court, including the annexes. So these 2 declarations is there. अब आप मुझे ये बताइए कि जब हम ओरिजिनल में रेट ड्राफ्ट करने जाएंगे तो वहां पे 2 ही डिक्लेरेशन होगा. वहां डिक्लेरेशन होगा रिगार्डिंग लिमिटेशन, वहां डिक्लेरेशन होगा रिगार्डिंग रेस जुडिकेटा, वहां डिक्लेरेशन होगा रिगार्डिंग लोकस स्टैंडाई, वहां डिक्लेरेशन होगा रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, एंड 5वां रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केस. इन 5 में से किसी एक को आप छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से यू विल लूज मार्क्स, बिकॉज यही चीज तो यहां देखा जाएगा कि आप कितने अलर्ट हैं. आपका जो क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन में जो केस इंसर्ट होता है वो सारा का सारा पार्ट वी आर टेकिंग इनटू ग्राउंड एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट द डिक्लेरेशन इज द मैंडेटरी पार्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम लॉ इटसेल्फ.
Am I right or wrong? अब मैंने इसको कंक्लूड किया. नेक्स्ट डे वी विल कंपेयर विथ एसएलपी एंड ऑल. मैं ये चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इसको पहले वाले पेज पे स्विच करें. पहले वाले पेज पे स्विच करें. और वो जो सी पार्ट मैंने किया था, भरत जी जरा उसको चेंज कीजिए कैप्टी पे. राजीव जी क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे हम. बिल्कुल बिल्कुल हम लेंगे. 2 मिनट में मैं जरा कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं समराइज कर रहा हूं. आप जरा देखिए, इस पे मैंने लिखा पॉइंट 1 कोर्ट एड्रेस टू द कोर्ट. यहां पर मैंने वो जुरिडिक्शन नहीं लिखा जो मुझे लिखना चाहिए था, बिकॉज दिस इज ओल्ड डॉक्यूमेंट. अनदर इज मेमो ऑफ पार्टीज सब्जेक्ट, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट. एंड 4 ऐसे पार्ट है जहां सीधा सीधा क्वेश्चन से मैप होता है. दैट इज फैक्ट ऑफ द केस, क्वेश्चंस फ्रेमिंग, ग्राउंड्स, प्रेयर्स एंड सिनॉप्सिस. यही आपकी कलाकारी है. और ये बिल्कुल क्वेश्चन फोकस्ड है या केस फोकस्ड. यानी केस और क्वेश्चन से यही सारे इंग्रेडिएंट को पिक करके इस फॉर्मेट में फॉर्म 28 के फॉर्मेट में पुट करेंगे. यू आर डन. उसका एक लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूं. थोड़ा सा और ऊपर कीजिए भरत जी, पेज नंबर दूसरे पेज पे आइए. बस होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए. मैंने क्या किया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, टाइम ऑप्टिमाइज करने के लिए AOR एग्जामिनेशन जून 2017 के ड्राफ्टिंग पेपर से क्वेश्चन नंबर 2 एक कॉपी किया वर्बेटम और इस जगह पर प्रोड्यूस कर दिया. बिना फुल स्टॉप कॉमा को चेंज किए इंटायर केस क्वेश्चन यू मे वेरीफाई हमने यहां पर इस पेज पर प्रोड्यूस किया. फिर वापस हमने क्या किया, इसको एनालाइज करने के बाद कैसे, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है. इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उसको मैंने आगे ऑर्गेनाइज किया. इसी का रिप्रोडक्शन है अनदर पेज पे. मेरा पॉइंट यहाँ पर सिंपल है कि जब भी केस मेरे पास आता है, क्लाइंट मेरे पास आता है, तो हम सबसे पहले क्या मांगते हैं, इंपॉर्म्ड ऑर्डर दे दो भाई. कुछ दो मत दो, मुझे इंपॉर्म्ड ऑर्डर दे दो, आई विल डेवलप द केस. राइट और रॉन्ग? सो माई प्राइम ड्यूटी और कॉज ऑफ एक्शन इन द सूट केस में बात करें तो हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि इस ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चन में कॉज ऑफ एक्शन कहां है. थोड़ा सा और ऊपर कीजिए. थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे. लास्ट का 2 पैराग्राफ मुझे नहीं तो हाँ बस इतना ही. आप जरा देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि ऑन अपील बाय द स्टेट द हाई कोर्ट रिवर्स. द वर्ड हाई कोर्ट केम इनटू द पिक्चर. लास्ट क्वेश्चन द हाई कोर्ट. So the action of the High Court is there. Yani this is the para, second last para on appeal filed by the High Court. That second last para is the impugned judgment for me in the question for the examination. We need to focus on this point. Reverse acquittal from such and such, such and such, such and such. Further, the non-explanation of injury is vital in this. और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो पैराग्राफ है वो ये कहता है कि दिस अप्रोच टू यू टू प्रिफेयर एसएलपी. सो दैट इज क्लियर कि रेमेडी क्या लेना है, आपको दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी यहां दिया हुआ है. इसके क्या पे A1 to A5 you feel the high court, and now the question is you feel that what you feel, you will feel the what high court did wrong. So you feel that the ground is given there, you feel that the High Court has not followed the principles before the reversing the order of acquittal. Acquittal को रिवर्स करके कन्विक्ट करने के लिए बड़ा ही केयरफुली करना होता है. सेटल प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट किया है. So one ground is already there. Can the High Court is allowed to do that? This is the question. Am I clear up to this point or not? So you will see here, you feel that one,
you feel that 2, you feel that 3 and you feel that 4. 4 जगहों पे you feel that है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. 4 ग्राउंड आपको स्पेसिफिकली दिया गया है. इवन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. और हाई कोर्ट ने क्या गलती की है इसके ऊपर, जस्ट फॉरगेट एंटायर थिंग. उसको बाकी का पार्ट आप न्यूज़पेपर की तरफ पढ़ लें, बाकी इसको जो है ना आप क्लियरली फोकस करें. कम टू द अनदर पेज भरत जी. नाउ मैंने बस यहां होल्ड कीजिएगा. इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपने ऊपर देखा, उसको मैंने एनालाइज किया और हर पैराग्राफ को नाम दिया, दैट इज ए बी सी डी ई. और जब आप पढ़ करके देखेंगे तो पैराग्राफ ए में द रिलेवेंट फैक्ट एंड मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है. पैराग्राफ बी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड चार्जशीट की चर्चा की गई है. पैराग्राफ 3 में द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या था बिफोर ट्रायल, वो डिस्कस किया गया है. पैराग्राफ डी में द एनालिसिस ऑफ एविडेंस एंड फाइंडिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट है. एंड पैराग्राफ ई में हाई कोर्ट एनालिसिस, ऑर्डर एविडेंस एंड फाइंडिंग है. एंड पैराग्राफ एफ में आपके पास केस है जिसमें यू फील दैट दिखा. ये एबीसीडी मैंने क्या किया है, वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के एक वर्ड को डिस्टर्ब किए बिना मैंने अपने कुछ वर्ड सप्लाई किए हैं, दैट इज अंडरलाइन, अंडर ब्रैकेट एंड एरो. दैट्स इट. एंड एबीसीडी, और कुछ नहीं किया है. थोड़ा सा ऊपर कीजिए. आप ए में देख लीजिए, यहां अंडरलाइन किया हुआ है. ये पूरी तरीके से वो सारा कुछ. थोड़ा और ऊपर कीजिए. सेम क्वेश्चन, थोड़ा और ऊपर कीजिए. देखिए, ये 2 पैरा है, प्रोसिक्यूशन का केस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन. और ऊपर जाइए. यस, डी वाले पैराग्राफ में ये ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है. और ऊपर जाइए. यस, ये वाला पॉइंट ई जो अभी हम पढ़ रहे थे, हाई कोर्ट रिवर्स्ड ऑर्डर ऑफ एक्यूटल and convicted, additional convicted A1 and A2, and these are the highlight you need to keep in mind for purpose of developing ground, question and synopsis. यही 3 चीज है ना एसएलपी में. फॉर्मेट को यदि साइड कर दिया जाए तो. थोड़ा और ऊपर कीजिए. दिस इज द लास्ट पार्ट. यहां पर क्या है, A1 A2 approach you to prepare a special leave to the Supreme Court. You feel that ground 1, ground 2. हर you feel that के बाद मैंने ब्रैकेट में अंडरग्राउंड दे दिया. This and this. And that's what the question is provided to you. So this is the SLP, civil or criminal. The difference between civil and criminal is only the remedial provision. The order 21 would be replaced as order 22. 31A would be replaced as 32. That we will discuss later, but the format is very similar. So what I concile, कि क्वेश्चन से कैसे आप पॉइंट्स पिकअप करते हैं एंड पुट अप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग ग्राउंड, फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड सिनॉप्सिस. सेकेंड पार्ट, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट. उस फॉर्मेट में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको डिस्टर्ब आपको बिल्कुल नहीं करना है. सेंट्रल पार्ट क्या है और एडिशनल एट्रीब्यूट्स क्या है, आप डिफिट एंड अदरवाइज. एंड आई होप आई डिड वेल विद इन टाइम. अब भरत जी इसको आप यहां से हटा लीजिए और थोड़ा सा कॉमन डिस्कशन क्वेश्चन से आंसर ले लें या नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए रख लें, जैसा भी आप लोग बताएं. और प्लीज भरत जी ये डॉक्यूमेंट आप शेयर कर लीजिएगा. हाँ राजीव जी, 2-3 things I want to ask. प्लीज. One first is please share this document and really बहुत बढ़िया सेशन था आपका. चलिए, थैंक यू सर. Number 2 नंबर 2 क्वेश्चन सर ये है कि जैसे हम एसएलपी सिविल बनाते हैं अंडर ऑर्डर 21 रूल 31A, वैसे ही एसएलपी क्रिमिनल ऑर्डर 22 कौन से रूल के अंदर बनाते हैं? मैं आपको इसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करूंगा. एग्जैक्टली आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 22 देखेंगे. ऑर्डर 22 रूल 2 सब क्लाउज सब रूल 2 एग्जैक्टली वही वर्ड लिखा हुआ है और वो रेफर करता है ऑर्डर 21 फ्रॉम 28 विथ
appropriate modification and adaptation, and that is the modification. जहां जहां सिविल है उस सबको क्रिमिनल करेंगे और जो जो रूल लिखा हुआ उसको वन डाउन कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं वापस मैं ये दिखा रहा हूँ, एक मिनट जरा मैं फॉर्म 28 को ले लूं. हाँ सर. मेरे एक सेकंड बस मैं थोड़ा सा बंद कर दिया था ना. फॉर्म 28 में जब ऊपर से देखते हैं तो लिखते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 21 रूल 31A. इसको आप देखेंगे जरा वेरीफाई कीजिएगा क्या है और इसको वापस वेरीफाई. क्रिमिनल में क्या करते हैं, ऑर्डर 22 रूल 21 करते हैं. 31 की जगह 21, यानी 3 को वन स्टेप डाउन किया. राइट सर. और जहां जहां सिविल है उसको क्रिमिनल करेंगे. और डिक्लेरेशन पैरा 3 में है रूल 32, इसमें भी 3 को वन डाउन करेंगे 22. 5 को भी वन डाउन कर देंगे. हाँ 5 को भी वन डाउन कीजिएगा. और इस सब को आप कंपेयर करके हमने सुप्रीम कोर्ट रूल से आप चेक कर लीजिए, आपको वही चीज मिलेगी. नहीं डिड ठीक है, परफेक्ट. राजीव सर. सर प्लीज. सर जैसे इसमें एसएलपी में जैसे बोलते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली बॉडी में नहीं आते हैं, फैक्ट्स एंड तो वो सिनॉप्सिस ऑफ लिस्ट ऑफ डेट्स में आते हैं. बिल्कुल. फॉर दैट पर्पस इजंट इट दैट लिस्ट ऑफ डेट्स आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, सो राइट? नहीं लिस्ट ऑफ डेट्स आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं. बिकॉज ऑफ द रीजन इज दिस, एसएलपी का जो ऑब्जेक्टिव है इट इज एज्यूम दिस इज द डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन. बिकॉज सारे रेमेडी आप ऑलरेडी हाई कोर्ट तक एग्जॉस्ट कर चुके हैं. आप ट्रायल हो गया, अपील हो गया, हाई कोर्ट हो गया, मतलब सारे हो गया. तो यहाँ फैक्ट से जैसे ही ऊपर चलते हैं वैसे ही फैक्ट क्वेश्चन रिप्लेस होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ आते आते सिर्फ क्वेश्चन रिमेन रह जाता है. सर बट इस बार जो लेक्चर हुआ था ना उसमें अनुपम सर ने बोला था कि एसएलपी में आपको पूरा ही फॉर्मेट आएगा एंड लिस्ट ऑफ डेट्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां से मुझे obviously यदि if they will ask they certainly reflect into the question कि prepare the list of dates. because बिना लिस्ट ऑफ डेट को समझे कोई भी एसएलपी का क्वेश्चन कैसे पिकअप करेगा. तो सर लिस्ट ऑफ डेट्स में ही हमें सारे एनेक्सर्स वगैरह लगाने हैं ना, इफ एट ऑल इफ देयर इज इन ओरिजिनल. इन एग्जामिनेशन आप एनेक्सर नहीं लगाते हैं. एग्जामिनेशन आधे घंटे में आपकी सर्टेन स्किल टेस्ट की जाती है, जैसा मुझे समझ में आया है. और मुझे लगता है कि फॉर्म 28 को जो है ना कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए. कंप्लीट मींस कंप्लीट विदाउट डिस्टर्बिंग as I demonstrated during last 90 minutes. So it should not be. ये if required, if someone, देखिए ये जो पार्ट है ना लिस्ट ऑफ डेट का, एसएलपी और अपील को, एसएलपी को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे पिटिशन में इसकी जगह है मेन बॉडी के अंदर. थैंक यू वेरी मच सर. लेकिन एसएलपी स्पेशल है. सर एसएलपी स्पेशल है, अदरवाइज आप जहां चाहे वहां इनकॉर्पोरेट कर लीजिए. दैट्स योर रिक्वायरमेंट एंड और क्वेश्चंस होंगे सर वो अगले सेशन में पूछेंगे, बट दैट वुड बी रिलेटेड टू. मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है जस्ट फॉर अ. मैं जरा एक स्क्रीनशॉट ले लूं स्क्रीन का. हाँ प्लीज. सर आप ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म नंबर 28 है, चाहे हम कोई भी पिटीशन ड्राफ्ट करें, चाहे सिविल या क्रिमिनल, सब में फॉर्म 28 का फॉर्मेट चेंज करना है, ऑर्डर नंबर चेंज. नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ गुरप्रीत मैम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस एंड अरेंजमेंट इन आवर माइंड हम काम करते हैं कि ये प्रिस्क्राइब्ड है, इसको रेफरेंस बनाते हैं और इसमें कैसे कैसे चेंजेस होगा उस चेंजेस को समझते हैं. राइट. तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि एक रेफरेंस से लोकेट करना कि कैसे करना. फॉर एग्जाम्पल ये भी एक अपील का पार्ट है और जितने भी अपील सुप्रीम कोर्ट में आते हैं सारे अपील बिल्कुल यही फॉर्मेट पे होते हैं, लेकिन वहां पर लिस्ट ऑफ डेट्स इंसर्टेड होते हैं. मतलब उसमें मिनिमम पैराग्राफ जो है ना वो फिक्स है, मैक्सिमम पैराग्राफ फिक्स नहीं है. यहाँ तो पैराग्राफ ही फिक्स है ना. उसमें आप डिक्लेरेशन भी डालेंगे, प्रोविजन भी डालेंगे और इवन और डिक्लेरेशन इनहांस होगा, लिमिटेशन पीरियड के बारे में भी डालेंगे, है ना, और साथ में फैक्ट भी डालेंगे वहां. बट एसएलपी इज वेरी स्पेशल. लेकिन सर पिटीशन के अंदर डालेंगे, क्योंकि अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा था जिन्होंने, वो कह रहे थे कि सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट में हम फैक्ट डालते हैं,
तो ये जब हम पिटीशन डालेंगे इसमें फैक्ट नहीं डालेंगे? नहीं, आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से आप निकाल लीजिए, जरा अपने आप के ब्रेन को कन्विंस कर लीजिए कि यदि लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ड्राफ्टिंग देखें, एक्सेप्ट एसएलपी में बोल रहा हूं, तो ब्रीफ फैक्ट एक पैराग्राफ होता है जो मेन बॉडी के अंदर है, दैट इज यू कैन से द मटेरियल फैक्ट, है ना, which is the necessary ingredient of all kind of appeal as well as this writ और arbitration and everywhere. जब तक आप फैक्ट नहीं डालेंगे कैसे होगा? बट एसएलपी इज वेरी स्पेशल, ये डिस्टिंक्शन हमको मार्क करना है। अदरवाइज इलेबोरेटेड लिस्ट ऑफ डेट्स आप डालना चाहें, यू कैन डू। रियल लाइफ में आप देख रहे हैं अपील में हम पूरे मेन बॉडी में ही ले लेते हैं। The structure is very clear into this and very logical, as I understand. पता नहीं आप लोग को इसको कैसे लेते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत लॉजिकल है। अगर जैसे कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई अगर कोई हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर एक्ट सेक्शन के अंदर और एक्ट मैम दिस पार्ट आई विल गो अगेन because in this time and this session we discussed about the format and discussed about कहाँ क्या कैसे होता है, logical integrity क्या है। My point is this कि the things are guided by law. Once you are going through TP, then ground is available from that article 139A section 25 and 406 only. वहीं पे आपको ग्राउंड मिलेगा और वही ग्राउंड यहाँ चाहिए। So ये पार्ट जो है ना थोड़ा डिप डाउन, this is today the first session, so let me enter into the another session. Once we will enter into that, we will take up, जैसे अपील की बात करेंगे तो सारे एप्लेट प्रोविजन को एक जगह हम कंपाइल करेंगे। आंसर आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही था कि जो सेक्शन नंबर है, जैसे सेक्शन नंबर कई सारे हैं तो वो हम भूल सकते हैं ना, तो क्या वो मेंशन करने जरूरी है, क्या हम उसको स्किप कर सकते हैं कि सो एंड सो एक्ट का सो एंड सो सेक्शन के अंदर हमने फाइल करा है? नहीं, ऐसा कुछ भूलने की मुझे नहीं लगता कि वो भूलते हैं। पहली बात, जब 2-3 जैसे 136 और ऑर्डर 21-22 बाय डिफॉल्ट आ जाता है, 302 का मतलब समझ में आ जाता है। सो समथिंग डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, और यदि नहीं है, ब्रेन में नहीं आ रहा है, तो इवन वी कैन पुट डाउन द एसेंस सो दैट कि एग्जामिनर वो समझे कि अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नहीं है मींस नहीं है, बट वी कैन नॉट गिव अप, वी कैन रिफ्लेक्ट देम कि वी नो। That's it. सेक्शन का कंटेंट अगर सेक्शन नंबर Rajiv sir, am I audible? Please. Sir, one thing I face difficulty with is formulating the questions of law. Second thing, I joined a little late, but I found the lecture very interesting. मुझे ये नहीं समझ आ रहा what are the analogies being drawn from form number 28. जैसे आपने बताया सिविल एसएलपी तो फॉर्म 28 हो गया, क्रिमिनल एसएलपी के लिए आपने कहा 1 स्टेप डाउन चले जाइए। एक बार अगर आप ब्रीफली बता सकें सर। मैं एक काम करता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत लोग लेट है। पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बी ऑन टाइम फर्स्ट। सर आई एम सॉरी फॉर दिस। नहीं, मैं ये कहूंगा इसलिए क्योंकि वो जो रिवीज अभी एग्जाम का टाइम है और बहुत कम टाइम है। आई कैन अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टीज ऑल्सो। सो द थिंग इज दिस session should be re-exercised once again. Then I am eager to do that. I am all for it, sir. If you have the time and tenacity, then I am okay. Please, क्योंकि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। यहीं पर देखिए लोग भटक रहे हैं, मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, मुझे वो फॉर्मेट चाहिए। बस फॉर्मेट पे नहीं, इंग्रेडिएंट पे फोकस करो, एक पैरामीटर पे, उसी का कंपाइलेशन सारे ड्राफ्टिंग में है। That is my point. सो आपने बिल्कुल सही कहा। यदि आप रूल्स का मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं, बट अभी आई एम रनिंग फ्रॉम सॉर्ट ऑफ टाइम। माय वाइफ इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिस, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं। मैं 5 मिनट और आपको मैं एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि जब ड्राफ्टिंग की बात करते हैं और एसएलपी की बात करते हैं, तो दिस इज रूटेड थ्रू सर्टेन प्रोविजन ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल,
136 कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की बेसिस से 136 उसको एंड आर्टिकल 145 देखेंगे तो लेजिस्लेटिव पावर टू द सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्होंने रूल बनाया और रूल में ऑर्डर 21 एंड 22 को प्लेस किया रिगार्डिंग एसएलपी। ऑर्डर 21 का रूल 3 सब रूल 1A पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म एसएलपी की जो फॉर्मेट है वो फॉर्म 28 में जानी चाहिए जी। उसी में पैरा 3(2) देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपको ये स्टेटमेंट देना है जी। पैरा 5 में देखेंगे तो लिखा होगा आपको ये चीज वहां मेंशन करना है, ये स्टेटमेंट भी चाहिए, समझे। उसी तरह यदि क्रिमिनल में जाएंगे तो क्रिमिनल में 3(2)A है ही नहीं, 3(1)A वहां पर जो है ना वो आपको 2(1) में वही चीज मिल जाएगा। अच्छा। और जैसे कि डिक्लेरेशन की बात थी जिसमें हम पैरा 3(2) था वहां 2(2) में वो सेम चीज अवेलेबल और सिमिलरली जो 5 में है वो 4 में अवेलेबल है। तो मुझे एक ऑर्डर एक रिदम दिखाई दिया कि सिविल और क्रिमिनल की ड्राफ्टिंग में जो चेंजेस हैं वो 2 फ्रंट पे हैं। वन फ्रंट पे सारे प्रोविजन को 1 डाउन करना है और दूसरा जितने भी सिविल है उसको क्रिमिनल लिखना है। सर एक कॉरोलरी जो मुझे और समझ आई थी आपके लेक्चर में कि जब हम सिविल अपील और क्रिमिनल अपील में जाते हैं तब ये तो हम ग्राउंड मानते ही हैं, इसको रेफरेंस रखते ही हैं, साथ में हम फैक्ट्स और डाल देते हैं। इज इट करेक्ट? Exactly. Brief fact. One para we are dedicatedly inserting in all the drafting except second appeal, even second appeal too, even this SLP. Everywhere we are inserting one para dedicated to brief facts. In main body. But SLP this is not there. बट अगेन जो एसएलपी में हम इंटरिम ग्राउंड्स और इंटरिम प्रेयर लेते हैं वो जनरली मैंने और ड्राफ्टिंग्स में नहीं देखा है। आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव सीन द करेक्ट। यू आर एग्जैक्टली करेक्ट क्योंकि इंटरिम का अदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस है कि ये दोनों पार्ट एक ही पिटिशन के अंदर ही प्राइज करते हैं, स्पेशल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, आप वहां पर लिख देते हैं अलॉन्ग विद इंटरिम रिलीफ। बट हाई कोर्ट में और अदर कोर्ट में सबके लिए डेडिकेटेडली अलग एप्लीकेशन जाता है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो इनकॉर्पोरेटेड है फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी टाइम एंड एवरीथिंग, बट यू हैव टू पे द कोर्ट फीस फॉर दिस इंटरिम एप्लीकेशन, दैट इज द 200 जी बिल्कुल एक्स्ट्रा वो पे करना पड़ेगा, बट इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट। इवन आप बाकी जगहों पे भी देखेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा। आई गेस सर एक चीज पूछना था। हाँ प्लीज अनुज जी जरा उनको भी टाइम देते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि कल आधे घंटे पहले बैठ करके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस पार्ट, देन वी विल प्रोसीड क्योंकि 10 we start at 5:30 tomorrow? We can do that. I do not have any objection. Okay, I'll join at 5:30. सर एक चीज पूछना था कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पेपर पढ़ा था उसके अंदर 5 साल की सजा थी नीचे, तो उसका कोई भी उसमें क्रिमिनल अपील फॉर्मुलेट करने के लिए बोला हुआ था, सर्टिफिकेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ था उसके अंदर। तो उसका क्रिमिनल अपील अगर मेरे को बनाना है, क्योंकि सर्टिफिकेट का तो एक स्पेशल प्रोसीजर है 134 में, हम उसके अंदर कोड कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल अपील बनाने को कह दिया तो नेचुरली इट वुड बी एन एसएलपी। तो क्रिमिनल डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? अरोड़ा साहब एक और इशूज है, इसके रिगार्डिंग लॉ को हम डिस्कस करेंगे। दरअसल इनलार्जमेंट सेक्शन 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन इनलार्जमेंट में भी वो 10 साल तक है, वो 10 साल तक है। लेकिन अपील जब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसमें कहीं भी आपका सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट अपील अंडर आर्टिकल 134 सी 134 बी या सी है 1B और इवन 132 का जो क्रिमिनल पार्ट है, 132 में भी तो क्रिमिनल आता है ना, उसमें भले सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, अदरवाइज सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे वो क्रिमिनल अपील बनाने को बोला हुआ था तो हम किसी रूट के थ्रू आएंगे, 5 साल की सजा है अगर तो हम एसएलपी के थ्रू आएंगे, लेकिन नीचे क्रिमिनल अपील लिखा हुआ था, तो यहाँ हमें एसएलपी बनानी है या क्रिमिनल अपील बनानी है उसकी? नहीं, जब उसने बोला क्रिमिनल अपील देन गो फॉर द अपील। अब क्या है प्रोविजन वो मैं देखूंगा तब बताऊंगा, बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट
मैंने लिस्ट डाउन किया है, आप इवन आपको रेफरेंस में दे दूं। अभी जो हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर शेयर किया गया था, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं को पेज 24 to 29 उस हैंडबुक का आप देखेंगे तो कैसे कैसे वो आता है, कि इसको भी मैं उसके साथ मैप करना चाह रहा था कि अपील के वेरियस प्रोविजन, फॉर एग्जांपल अपील अंडर सेक्शन 30 एंड 31 AFT एक्ट, क्रिमिनल अपील की बात मैं करूं तो अब क्रिमिनल अपील अंडर सेक्शन 10 ऑफ द स्पेशल कोर्ट एक्ट, यहाँ भी 5 साल के पनिशमेंट हो सकते हैं। अपील अंडर 374 ऑफ द CRPC, अपील अंडर 380 फॉर द CRPC, अपील अंडर सेक्शन 19 1B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, अपील अंडर सेक्शन 2 सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट एक्ट। और इस तरीके से सिविल अपील की बात करें तो देयर आर 17 स्टैट्यूटरी पार्ट जहां से अपील रूटेड, तो और उसमें भी अलग अलग पार्ट है। तो कहां से अपील आ रहा है वो केस पे डिपेंड करेगा। यदि मान लीजिए कि स्पेशल कोर्ट एक्ट से आ रहा है, हो सकता है वहां 10 साल का सजा हो, तो वहां पर तो अपील ही लाई करेगा ना सर, अरोड़ा साहब। तो उसमें सेक्शन कौन सा रहेगा, मतलब आर्टिकल की मेंशन करना है मेरे को सुप्रीम कोर्ट रूल्स का क्रिमिनल अपील का, तो उसमें कौन सा सुप्रीम कोर्ट रूल्स होगा, फॉर्मुलेट होगा? हाँ, ये पार्ट हम लोग कल का शेड्यूल्ड है ना, आप जब मैसेज में देखेंगे मेरा तो उसमें कल के लिए शेड्यूल है अपील पार्ट, तो कल के लिए रहने देते हैं। उसमें आप अपील का एक पैराग्राफ आप देखेंगे ना, क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट रूल्स, मैं आपको रेफर करता हूं, जरा सा आप एक सेकंड रीड कीजिएगा। आप यहाँ पर आइए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 20 और रूल 21 मैं रीड आउट करता हूं, आपको सारी क्लैरिटी आएगी। एक्सेप्ट वेयर स्पेशली अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल्स द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर with necessary modification and adaptation shall apply to statutory appeals filed under any enabling act or provision. समझे? That is not limited to certificates. That is not limited to certificates. अपील में सर्टिफिकेट कहाँ है? कहाँ से आया? क्रिमिनल अपील में जो सर्टिफिकेट है 134. Sir, I think he is talking about certificate of High Court. नहीं, 134 में आप कहाँ सर्टिफिकेट देते हैं? हाई कोर्ट देते। दैट इज द एनेक्सर पार्ट ना, एनेक्सर पार्ट। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है। हाँ प्लीज, हार्डली टेक 1 मिनट। आपने जो क्वेश्चन दिखाया था अभी, उसमें एक क्वेश्चन में लास्ट में बनाना था प्रिपेयर द SLP अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर बेल। अब यहाँ पे मैंने SLP बना दिया, बेल के लिए तो मैं इंटरिम रिलीफ में डाल दूंगा, तो एप्लीकेशन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मैं ये जो है ना, मेरे एंड पे ये मेरे एजम्पशन में थोड़ी सी गलती है। मैंने एज्यूम कर लिया कि एवरीवन विल अंडरस्टैंड लाइक दिस, इट शुड बी एलैबोरेटेड प्रॉपर्ली। सर वन हम्बल सबमिशन, एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं। इसमें नहीं, उसी में इंटरिम वाला पार्ट ही बेल है सर। वन हम्बल सबमिशन सर, और वो भी कंडीशन है, क्योंकि कई बार बेल रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट SLP यदि आता है तो उसमें मेन प्रेयर भी तो वही होता है। सर वन हम्बल सबमिशन सर, वन सबमिशन। अरे भाई साहब नरसिम्हा सर, नॉट सबमिशन, जस्ट आप शेयर कीजिए सर। ये फॉर्मेट है ना सब पूरा, वो 2013 पूरा 1960 पूरा वही रूल्स वही प्रोसीजर में पूरा आ रहा था। कंपैरेटिव व्हाट वी आर टेकिंग नाउ, इट इज नॉट इन द फॉलो अप, वो पूरा कंफ्यूजन में है, जो फॉर्मेट में पूरा है। जरा वो क्लैरिटी आया तो कल जरा पूरे डिस्कशन में जो SLP फॉर्मेट जो फॉर्मेट से सिस्टमैटिक प्रोसेस में, ये प्रोसेस में जाके सिस्टमैटिक में जरा मूवमेंट है तो और क्लैरिटी आता सर। नरसिम्हा सर, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है सर। थोड़ा आप माइक के पास आएंगे तो क्लियर आवाज आएगी। सर my idea is that in 2013 what 1996 what the things of procedures and sections are there, still it is maintaining all the formats sir. And apart from that, what the procedure now we are telling, it is giving the relevance of the point, the procedural aspects. Sir, my point, my focus, my prime focus for today's discussion or this
5 days discussion is It is introductory part. regarding entirely dedicated and confined to the AOR examination. Yes, sir. I understand. And there are lot of difficulties is coming there. So we will discuss with, we will sit with you in cafeteria, coffee पियेंगे हम लोग, and we will discuss everything. But right now, we will focus on the exactly the format, what was the earlier and what is the other. No, sir. Generally speaking, instead of one petition is 35, the numbering and the orders are not perfect in the 1966. It is changed. Only in that it is there. Some points of clarification we will take, sir. That is what I was not making the internet. We will take the format that one. And because we are making the procedural part, it is coming in a very systematic way. Because we are able to focus that. So some enhancement it is there with format details, right from synopsis to the movement. The connectivity is giving a proper shape with all the petitions. It is humble submission that may be taken into consideration. That's all. थैंक यू. आप आइए, बैठते हैं हम लोग, मैंने आज ही आइए, यदि आप लाइब्रेरी आते हो तो कॉफी पे बैठते हैं हम लोग, इस साथ में कॉफी पियेंगे. चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Sir, Thank you, Rajiv. Thank you for your efforts. Thank you, sir. Thank you. आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू आपके प्रेजेंट रहने के लिए, क्योंकि मैं ये काम तो कर ही रहा हूँ. ओके, दिस इज माय थर्ड सेशन रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स. Sir, it is highly Thank you, privileged. sir. Thank We are you. all happy. थैंक यू सर. Thank you very much, Rajiv ji. Thank you, sir. Thank you, Thank you sir. very much. And thank you to everybody. Thank you, everybody.